Hi friends, welcome to your channel तमाल IT टिप्स एंड टॉपिक्स। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है SAP MM इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर 2025। SAP मटेरियल मैनेजमेंट और SAP MM का ऊपर 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ये वीडियो मेनली जो SAP MM का ऊपर काम कर रहा है और SAP MM का ऊपर काम करना चाहते हैं और SAP MM क्या है, ये मॉड्यूल का फंडामेंटल बेस क्या है, वो सब चीज़ का ऊपर जानना चाहता है। दोज हु आर मेनली बिगिनियर्स, दोज हु वर्किंग ऑन SAP MM functional module, those who wants to know about the SAP MM, those who wants to start with their journey with the SAP MM। ये वीडियो यही लोगों के लिए है। तो ये वीडियो मैंने स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस एंड आंसर है SAP MM 2025 का, वो क्वेश्चन का मैं आंसर का साथ आपका सामने डिस्क्राइब करूँगा। इवन ईच एंड एवरी आंसर को मैंने एलाबोरेटली डिस्क्राइब करूँगा, सो दैट नॉट ओनली आंसर, आपको वो फंडामेंटल क्वेश्चन का जो फंडामेंटल है, आंसर का जो डेप्थ है, वो भी आपको पता चले, सो दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन छोड़ के भी अगर उसका रिलेवेंट कुछ क्वेश्चन आपका पास आता है, सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एंड व्हाट वुड बी द राइट आंसर दैट यू एबल टू अंडरस्टैंड। सो ये जो वीडियो है, इसमें आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी क्वेश्चंस एंड आंसर इन बोथ द लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, बिकॉज मैंने बहुत सारे रिक्वेस्ट रिसीव किया फ्रॉम माय यूजर्स एज वेल एज माय व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, जे whatever the questions or whatever the content mainly that should be described in both the language, so that it would be spread out to the broader audience, so many people can get a benefit and advantage from these videos. So that's why from now, whatever the things will be there, I will be describing these things Hindi and English in both the language. Okay, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को दिक्कत हो सकते हैं, तो उसको प्लीज़ मैनेज करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा जो उतना अंडरस्टैंडिंग उनका अच्छा नहीं है हिंदी का ऊपर। सो उसीलिए मैंने थोड़ा इंग्लिश में भी डिस्क्राइब करूँगा। अभी बहुत सारे लोग हैं जिसका इंग्लिश भी उतना अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं है, उसके लिए मैं हिंदी में डिस्क्राइब करूँगा। तो प्लीज़ बी विथ मी, ये वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो से बहुत सारे नॉलेज आप लोगों को मिलने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट with the first question. What is SAP MM or explain what is SAP MM? देखो, SAP MM is a basically core functional module in SAP। SAP का जो फंक्शनल बहुत सारे मॉड्यूल होता है, उसमें से SAP MM is a functional module। SAP MM means SAP Material Management। SAP का बहुत सारे फंक्शनल मॉड्यूल है, लाइक SAP MM है, SAP FICO है, SAP SD है, SAP PP है, SAP QM है। देर आर लॉट्स ऑफ फंक्शनल मॉड्यूल एंड SAP MM इज वन ऑफ देम। तो व्हाट इज SAP MM? SAP MM means SAP Material Management is a core module in SAP ERP, whatever it is the SAP ECC as well as SAP S4 HANA. It is used for procurement, inventory management and material valuation. It ensures the material are available in the right quantity and at the right time. तो SAP MM का जो मेनली डेफिनेशन है, जो SAP MM एक कोर मॉड्यूल है, इसमें ये दो जो प्लेटफॉर्म यूजुअली है SAP का, जो SAP ECC, इट इज़ ये थोड़ा सा अर्लियर मॉडल है। SAP ECC, SAP ERP सेंट्रल कंपोनेंट, अभी जो चल रहा है SAP S4 HANA, दोनों में ही SAP मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल इज अवेलेबल सॉरी, एज वेल एज SAP MM मॉड्यूल यूजुअली कहाँ यूज़ होता है? प्रोक्योरमेंट, इन्वेंटरी, परचेसिंग, मटेरियल वैल्यूएशन। There are lots of health thing
SAP MM जहाँ यूज होता है। SAP MM आपको इंश्योर करता है जो मटेरियल्स आर अवेलेबल इन द राइट क्वांटिटी, राइट फॉर्मेट एंड इन द राइट टाइम। नीचे मैंने एक छोटा सा आपको ग्राफ दिया हूँ, जैसे SAP MM इन्वेंटरी, परचेसिंग, मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग एंड मास्टर डेटा। ओके, तो इसमें क्या है, परचेसिंग में आपका आता है लॉजिस्टिक्स इनवॉइस वेरिफिकेशन, परचेज रिक्विजिशन, RFQ, परचेज ऑर्डर। मटेरियल मास्टर डेटा में क्या आता है, वेंडर एंड मटेरियल मास्टर डेटा, परचेज इन्फो रिकॉर्ड। इन्वेंटरी में क्या आता है, फिजिकल इन्वेंटरी, इन्वेंटरी मैनेजमेंट। मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग में क्या आता है, कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग। तो जो SAP MM मॉड्यूल है, मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल है, इसका मेनली देयर आर फोर पिलर्स। वन इज द परचेसिंग and master data, then material resource planning, then inventory. So this is called SAP MM. What is the next question? What are the key component of SAP MM? SAP हर चीज का जो component होता है, तो SAP MM का key component क्या है? SAP MM का key component है purchasing, inventory management, material master data, vendor master data, valuation and account determination, invoice verification. So there are 7 components are there in SAP MM. First is the purchasing, then inventory management, then material master data, then vendor master data, then valuation and account determination and इनवॉइस वेरिफिकेशन। और भी है, देयर आर few more components are there, whatever I have explained about the 6 major components. From purchasing you can able to understand the purchasing state in terms of PR, purchase requisition, PO, purchase order. Inventory management, you can able to understand about the inventory management, what about the inventory movement. Material master data, you can these are the material master data, vendor master data. These are the two master data. In material master data you can able to understand about the informations of materials. Vendor master data you can able to understand about the data or information about a vendor. Valuation and account determination is also a key component on SAP MM. Invoice verification is the basically thing of the difference between your PO, purchase order, and your invoice. Okay, so this is actually invoice verification. I will explain later about the invoice verification in a specific manner. So now there are 6 components are there in SAP MM. Go to next question, that is what is a purchase requisition? Purchase requisition which is short in PR. तो purchase requisition क्या है? A purchase requisition is an internal document requesting the purchasing department to procure a certain quantity of a material or services. So what is purchase requisition? Purchase requisition is an internal document. It is an internal document. It is requesting the purchasing department to procure those who are the purchasing. Suppose any of the department, whatever the materials they are using, that is not available in the stock or that needs to be ordered. So that particular department send a request to purchasing department to procure the certain quantity of that particular material or services. Purchase requisition is a internal document. Purchase requisition doesn't contain the value of the material, of the purchasing material. Only quantity of the material is mentioned in the purchase requisition.
So that's why it is called internal document, because it would not be shared with the vendor or supplier. It is the communication within the internal departments. तो परचेज रिक्विजिशन एक इंटरनल रिक्वायरमेंट है, जो आपका एक डिपार्टमेंट का अगर कोई भी वो परचेज कोई भी वो मटेरियल और सर्विस यूज़ करते हैं, वो सर्विस और मटेरियल उनका पास अभी नहीं है लेकिन उनको चाहिए, और वो नया प्रोक्योरमेंट करना चाहते हैं, तो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो परचेसिंग एक कॉमन सेंट्रल डिपार्टमेंट होता है, उनका पास रिक्वेस्ट भेजेगा जो आप ये मटेरियल और ये सर्विस प्रोक्योर करके हमको दीजिए। ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसमें आपका वैल्यू नहीं रहता, रेट नहीं रहता, प्राइस नहीं रहता, इसमें सिर्फ क्वांटिटी रहता है, और वो क्वांटिटी पास ऑन होता है जो पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट यूज़ करना चाहता है, वो परचेस डिपार्टमेंट को देता है टू प्रोक्योर दैट सर्विसेज और मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परचेज ऑर्डर? परचेज ऑर्डर से पहले बनता है परचेज रिक्विजिशन, परचेज रिक्विजिशन का बाद परचेज ऑर्डर बनता है। सो परचेज ऑर्डर इज ए फॉर्मल रिक्वेस्ट सेंड टू ए वेंडर टू सप्लाई material or services under specific condition like price, delivery date and quantity. So purchase order is a external document. It is a formal request sent to a vendor to supply that particular materials or services under specified condition like price, delivery date and quantity. तो परचेज ऑर्डर एक एक्सटर्नल और एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होता है टू द वेंडर, क्योंकि वो वेंडर के पास जाता है, उसमें वेंडर को इंश्योर करने के लिए बोला जाता है, सप्लाई करने के लिए बोला जाता है कि आप आपका जो मटेरियल जो हमारा रिक्वायरमेंट है और सर्विस अभी स्पेसिफिक कंडीशन, मतलब उसका प्राइस क्या है, उसका डिलीवरी डेट क्या होना चाहिए, उसका क्वांटिटी क्या होना चाहिए, वो सब कंडीशन को आप मद्देनजर रख के आप मेरे को मटेरियल भेजिए, आप मेरे को सप्लाई कीजिए मटेरियल। दैट इज परचेज ऑर्डर। परचेज रिक्विजिशन पहले बनता है, उसके बाद बनता है परचेज ऑर्डर। परचेज रिक्विजिशन में आपका रेट नहीं रहता, परचेज डिलीवरी डेट मेंशन नहीं होता है, ओनली क्वांटिटी रहता है, प्राइस भी नहीं रहता, लेकिन परचेज ऑर्डर में ये सब रहता है। परचेज रिक्विजिशन एक इंटरनल कम्युनिकेशन बिटवीन द टू डिपार्टमेंट इन ए ऑर्गेनाइजेशन। परचेज ऑर्डर ए फॉर्मल रिक्वेस्ट ऑर्डर होता है जो वेंडर का पास जाता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट। वेंडर का पास जाता है टू सप्लाई मटेरियल एंड सर्विसेज अंडर सच सर्कमस्टेंसेस लाइक प्राइस, डिलीवरी डेट एंड क्वांटिटी। फिफ्थ, व्हाट आर मूवमेंट टाइप इन SAP MM? SAP MM में मूवमेंट टाइप क्या होता है? मूवमेंट टाइप आर यूज टू क्लासिफाई मटेरियल मूवमेंट्स लाइक गुड्स रिसीव्ड, गुड्स इशू, स्टॉक ट्रांसफर. So movement type is basically used for classify the materials movement. Suppose if you want to receive or you receive the material from the vendor through GRN or through the stocks transfer or through the material return from your production, or you supply material to your production, these are all the movement of the material, and your movement type will classify the type of the materials movement. Suppose if you want to receive the material from any of your vendor, or you purchased and received the material, the movement type would be 101. So 101 means 101 movement type means you have received the material from vendor. Suppose if you want to issue some materials to your production or the cost center, the movement type would be 201. So suppose if you want to initial received any material, the movement type would be 501. So these are the movement type to classify or determine the materials movement. तो movement type क्या होता है? movement type आपको
क्लासिफाई करता है, आपको डिटरमाइन करता है जो मटेरियल का मूवमेंट कैसा हुआ है। आप ये मटेरियल परचेस किया, आपका ये मटेरियल आप आपका प्रोडक्शन को आपका स्टॉक से ट्रांसफ़र किया, और ये मेटी स्टॉक से सॉरी ये आपका प्रोडक्शन से आपका पास आपका डिस्पैच हुआ है, और प्रोडक्शन से आपका फिर से आप जहाँ से इशू किया था वहाँ आ गया, और ये मूवमेंट ये मटेरियल आपका ब्लॉक मटेरियल में चला गया। एनी काइंड ऑफ मूवमेंट इन मटेरियल जो क्लासिफाई होता है, जो डिटरमाइंड होता है, वो होता है आपका मूवमेंट टाइप से होता है। What would be the next questions? What is the material master record? Material master record क्या है? It contains all the information. It contains all the information required to manage a material, including basic data, purchasing data, accounting data, and inventory data. So material master record is a material master information on data. So that's why it contained each and every single information of the material, like material, what is the basic data of the material, type of the material, purchasing data of the material, accounting data of the material, inventory data of the material, each and every single information stored to the material master. तो मटेरियल मास्टर में सब कुछ रहता है, ये मटेरियल के बारे में जितने इन्फॉर्मेशन है, मटेरियल किस टाइप का मटेरियल है, उसका परचेसिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, उसका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, उनकी इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन क्या है, सब कुछ एक मटेरियल मास्टर डेटा में रहता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड शेड्यूलिंग एग्रीमेंट? कॉन्ट्रैक्ट एंड शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या है? Contract is a outline. Contract is a outline agreement with fixed condition and no fixed delivery date. Contract is a outline agreement where you can fix your condition but no delivery date. Scheduling agreement क्या है? Long term agreement with specific delivery schedule. It's a long term agreement with specific delivery schedule. तो कॉन्ट्रैक्ट में आपका एक आउटलाइन बन जाता है, एक आपका जस्ट एक टेंटेटिव काइंड ऑफ एग्रीमेंट, जहां आपका कंडीशन जो है फिक्स्ड कंडीशन रहेगा, जिस ए होता है तो इतना, वो होता है तो इतना, जो भी कंडीशन आपका फिक्स रहता है, लेकिन कोई डिलीवरी डेट मेंशन नहीं रहता। जब डिलीवरी का टाइम आएगा तब उसमें डिलीवरी डेट मेंशन होगा। शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में क्या होता है? ए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है जिसमें आपका डिलीवरी शेड्यूल भी मेंशन रहेगा, जे इसमें इतना डिलीवरी होगा, इस डेट में इतना डिलीवरी होगा, इस डेट में इतना डिलीवरी होगा, और इस पीरियड में, इस वीक में इतना डिलीवरी होगा। ऐसा करके आपका डिलीवरी जो शेड्यूल है वो फिक्स रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट में वो फिक्स नहीं रहता है, कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ कंडीशन फिक्स रहता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड कंजम्पशन बेस्ड प्रोक्योरमेंट? क्या डिफरेंस है स्टॉक एंड कंजम्पशन बेस्ड प्रोक्योरमेंट में? इन SAP MM द की डिफरेंस बिटवीन स्टॉक बेस्ड एंड कंजम्पशन बेस्ड प्रोक्योरमेंट lies in how procurement is triggered and managed. Stock based procurement based on minimum stock level, procurement based on minimum stock level, consumption based trigger based on past consumption. तो जो भी आपका जो स्टॉक बेस्ड एंड कंजम्पशन बेस्ड प्रोक्योरमेंट उसका मेन फंडामेंटल है। सपोज आपका पास कोई स्टॉक है, वो स्टॉक सपोज 100 पीस आपका पास कोई स्टॉक है, आप वो स्टॉक में आप एक चीज स्पेसिफाई करके रखा, अगर ये स्टॉक 10 क्वांटिटी का नीचे आ जाएगा तो ऑटोमेटेड इसका प्रोक्योरमेंट के लिए रिक्वेस्ट चला जाएगा। तो 100 से जैसे 9 हो गया और 8 हो गया, ऑटोमेटेड आपका प्रोक्योरमेंट के लिए ट्रिगर हो जाएगा आपका रेस्पेक्टिव परचेसिंग डिपार्टमेंट को, यदि स्टॉक्स नीड टू बी फर्दर प्रोक्योर।
कंजम्पशन बेस्ड क्या होता है, आपका जो पास्ट कंजम्पशन पैटर्न है, जितना मेरा कंजम्पशन होता है, एक वीक में मेरा इतना कंजम्पशन होता है, एक मंथ में मेरे इतना कंजम्पशन होता है, उसी हिसाब से आपका प्रोक्योरमेंट ट्रिगर होगा। एक तो एक स्टॉक का लेवल के हिसाब से मिनिमम स्टॉक को बेसिस पे आपका प्रोक्योरमेंट होता है, दूसरा कंजम्पशन का बेस में आपका प्रोक्योरमेंट होता है। आपको पता है एक महीने में मेरा कितना कंजम्पशन होता है रॉ मटेरियल, और कोई भी आपका कंज्यूमेबल पार्ट्स कितना होता है, उसी हिसाब से आपका प्रोक्योरमेंट रिक्वेस्ट जाता है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक बेस्ड एंड कंजम्पशन बेस्ड। Next, what is the role of valuation class in SAP MM? This is a very important question. Most of the interview में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, what is the valuation class in SAP MM? Answer: the valuation class in SAP MM play a key role in automatic account determination. Valuation class एक automatic account डिटर्मिनेशन का रोल प्ले करता है। इट लिंक्स ए मटेरियल टू द एप्रोप्रिएट जनरल लेजर। इट लिंक्स ए मटेरियल टू द एप्रोप्रिएट जनरल लेजर अकाउंट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन लाइक गुड्स मूवमेंट, इनवॉइस पोस्टिंग और स्टॉक वैल्यूएशन। तो जो वैल्यूएशन क्लास होता है, ये वैल्यूएशन क्लास मेनली डिपेंड करता है आपका ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन ऊपर वैल्यूएशन क्लास क्या होगा। इट लिंक्स ए मटेरियल टू एप्रोप्रिएट जनरल लेजर। ये कौन सा मटेरियल कौन सा जीएल का अंडर पे आएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, एफआई में, ड्यूरिंग दैट ट्रांजैक्शन गुड्स मूवमेंट, गुड्स इनवॉइस पोस्टिंग, स्टॉक वैल्यूएशन। तो कौन सा मटेरियल कौन सा अकाउंटिंग लेजर का अंडर पे आएगा, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली वैल्यूएशन क्लास। वैल्यूएशन क्लास का ऊपर अगर कोई भी वैल्यूएशन क्लास का ऊपर डिपेंड करता है, जो वैल्यूएशन क्लास का जो वैल्यू होता है, जो नंबर होता है, वो नंबर के ऊपर डिपेंड करता है जो कौन सा जीएल अकाउंट में ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन ए जीएल अकाउंट पे जाके हिट करेगा, जीएल अकाउंट पे जाएगा। सपोज कोई पर्टिकुलर मटेरियल का वैल्यूएशन क्लास एक्स है और कोई पर्टिकुलर मटेरियल का वैल्यूएशन क्लास वाई है, तो वैल्यूएशन क्लास एक्स देख के डिफाइन होगा जो वो कौन सा जीएल में जाएगा, और वैल्यूएशन वाई देख के डिफाइन होगा वो कौन सा जीएल अकाउंट पे जाएगा। तो यहाँ एक इंटीग्रेशन होता है एसएपी एमएम का साथ एसएपी एफआई का। This is the integration point between SAP MM and SAP FI. Next question क्या है, what is the difference between planned and unplanned delivery cost? Planned and unplanned delivery cost क्या है? Planned known at the time of pre-creation. Unplanned incurred during the invoice verification but not planned earlier. So planned डिलीवरी कॉस्ट में क्या होता है, व्हाट एवर योर फ्रेट, इंश्योरेंस, दोज आर रिलेटेड टू योर लॉजिस्टिक्स एंड दोज आर रिलेटेड टू योर मटेरियल प्रोक्योरमेंट, परचेसिंग. So these freight, insurance, these are the element are already been mentioned in your purchase order. And unplanned में कोई क्या होता है, these are not mentioned in your purchase order. You can able to understand after getting the invoice. After getting the invoice, you can able to see that what about your freight, insurance, the logistics expenses you can able to see. So प्लांट में आपका फ्रेट क्या होता है, आपका इंश्योरेंस का फ्रेट कितने का है, इंश्योरेंस कितने का है, ये आपका प्रियो बनने का टाइम पे रहता है, उसमें मेंशन रहता है. जो प्लांट होता है, प्लान डिलीवरी कॉस्ट होता है. अनप्लान डिलीवरी कॉस्ट में वो पीओ में मेंशन पहले से नहीं रहता है, जब आपका पास इनवॉइस आता है वो इनवॉइस में रहता है. ये क्या आपका फ्रेड इंश्योरेंस का वैल्यू क्या है, प्राइस क्या है,
So these are the between the planned and unplanned cost. How is the release strategy used in purchasing? How is the release strategy used in purchasing? A release strategy defines approval processes for documents. A release strategy defines the approval processes for document like PR or PO based on criteria such as value, planned, purchasing group. So release strategy is a approval process or approval mechanism. It is triggered on the basis of criteria. Suppose if you create a PO or if you create a PR, so after creating the PO and PR, it will go to the respective persons or respective department who head to release that PO and PR. But this strategy is already defined to your system on the basis of value, on the basis of planned, on the basis of purchasing group, on the basis of respective criteria. It would be triggered for approval. तो आपका जो रिलीज स्ट्रेटेजी है ये एक अप्रूवल मैकेनिज्म है सॉरी जब आपका पीओ पीआर बनता है पीओ पीआर का वैल्यू प्लान परचेसिंग ग्रुप का हिसाब से वो पीओ पीआर जाता है ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है रेस्पेक्टिव एचओडीज का पास और रेस्पेक्टिव पर्सन का पास टू गेट द अप्रूवल. दिस इज कॉल्ड रिलीज स्ट्रेटेजी. नेक्स्ट, what is the batch management? Batch management is very important. It is used to manage material in batch. It is used to manage material in batch where each batch has a unique number. Where each batch has a unique number. Useful for industries like pharma or food where traceability is essential. See, batch management is essential in today each and every domain and each and every like procurement. If any kind of material, suppose you are receive or you are issuing to your next production or you are issuing to your any of the cost center, the batch number should be very important and that should be unique, so that if you have anything or if you need to get any information later, so you can able to understand and you can able to trace that particular material through the batch number. So that's why batch management is very important. Batch management क्या है? Batch management होता है हर मटेरियल का जो ग्रुप होता है और मटेरियल में आपका एक बैच नंबर रहता है. वो बैच नंबर आपका यूनिक होता है. अगर आप वो मटेरियल किसी जगह पे यूज़ किया, कोई भी प्रोडक्शन को दिया, कॉस्ट सेंटर को दिया और आपने रिसीव भी किया, तो उसमें बैच नंबर से आप ट्रेस कर सकते हो जो कौन सा मटेरियल क्या बैच नंबर है. कभी वो मटेरियल से कुछ मटेरियल खराब निकला, कभी वो मटेरियल डिस्ट्रॉय हुआ, कभी वो मटेरियल आप किसी को दिया, किसी से दिया, तो बैच नंबर से आप वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मटेरियल और बैच ऑफ द मटेरियल को आप ट्रेस कर सकते हो. थर्ड, व्हाट इज ए source list and quota arrangement? What is the source list and quota arrangement? Both source list and quota arrangement are tools in SAP MM that helps manage and control vendor selection during the procurement process, but they serve different purpose. Both source list and quota arrangement are tools in SAP MM that helps manage and control vendor selection during the procurement process, but they serve different purpose. Source list of preferred vendor for a material. Quota arrangement allocate procurement quantity among multiple vendor based on quota. So these are the basically tools to understand and control the vendor selection during the procurement. ये सोर्स लिस्ट एंड कोटा अरेंजमेंट ये दोनों एक टूल से प्रोसेस है जिसका हेल्प से
आप आपका वेंडर सिलेक्शन को मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस. They serve different purposes. Next, what are the type of info record in SAP MM? SAP MM info record is very important. In my last video, I have also mentioned about the SAP info record, MM info record. In SAP MM, a purchasing info record or info record means PIR, purchasing info record, which is called PIR, stores key data about the relationship between a material and a vendor. This is the data, key data, information which is stored in the purchasing info record, relationship between a material and a vendor. It includes information such as pricing, delivery term, lead time, and planned delivery cost. SAP MM, a purchasing info record, stores key data about the relationship between a material and a vendor. It includes information such as pricing, delivery term, lead time and planned delivery cost. ये जो सब इंफॉर्मेशन है ये SAP इन्फो रिकॉर्ड में स्टोर रहता है. SAP इन्फो रिकॉर्ड एक इंफॉर्मेशन स्टोरिंग सेंटर है जहां आपका वेंडर एंड मटेरियल का रिलेशनशिप और रिगार्डिंग ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है. दिस इज कॉल्ड इन्फो रिकॉर्ड. व्हाट इज द कंसाइनमेंट स्टॉक इन SAP MM? SAP MM में कंसाइनमेंट स्टॉक क्या होता है? स्टॉक ओन्ड बाय द वेंडर बट stored at your premises. You are charged only when you use the stock. Suppose I can give you an example. Some stores are lying in your factories or in your premises, but it is owned by your vendor. It is not yours. If you want to use some material from that particular stock, you will be charged for only that stock which you used. So that is the consignment stock. Consignment stock is that the stock is owned by the vendor but it is stored in your premises. If you use the stock, you will only be charged what you used. Whatever the still lying in the store, that would not be charged to you. Whatever the material you use, that only being charged to you. तो स्टॉक कंसाइनमेंट क्या होता है? वेंडर का स्टॉक, वेंडर का मटेरियल आपका प्रीमिसेस में पड़ा है, आपका प्रीमिसेस में स्टोर्ड है, तो वहां से आप जितना मटेरियल यूज करोगे सिर्फ उतना मटेरियल को ही आपको वेंडर को चार्ज देना पड़ेगा, और जितना मटेरियल स्टोर में पड़ा है उसके लिए आपको वेंडर को नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो मटेरियल जो स्टोर आपका पास है लेकिन मटेरियल वेंडर का है, वेंडर उसका ओनर है. आप वो स्टोर से जितना मटेरियल कंज्यूम करोगे सिर्फ इतना मटेरियल का आपका ऊपर चार्ज, मतलब आपका ऊपर बिलिंग आएगा, बिल आएगा, उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा. जितना स्टिल अभी तक पड़ा है आपका स्टोर में, प्रीमिसेस में, उसके ऊपर नहीं देना पड़ेगा. व्हाट आर द इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ SAP MM विद अदर मॉड्यूल्स? FI का साथ इंटीग्रेट होता है, SD का साथ इंटीग्रेट होता है, PP का साथ इंटीग्रेट होता है, वेयर हाउस मैनेजमेंट का साथ भी इंटीग्रेट होता है MM का. सो वेयर MM इज इंटीग्रेटेड विथ FI फॉर इनवॉइस पोस्टिंग एंड अकाउंट डिटर्मिनेशन. फॉर इनवॉइस पोस्टिंग एंड अकाउंट डिटर्मिनेशन यहाँ FI का साथ इंटीग्रेट होता है. SD फॉर स्टॉक ट्रांसफर and third party processing. In SD is MM integrate with the stock transfer and third party processing. PP for raw material availability and production order. Warehouse management to keeping your material to the warehouse, getting out the material from a warehouse, getting in the material to the warehouse. यहाँ आपका warehouse management का साथ इंटीग्रेट होता है. SAP functional models are integrated to each and every other functional models. So MM is integrated with
FI, when invoice posting and account determination is there. SD, when stock transfer and third party processings are there. PP, for raw material availability and production orders are there. And warehouse, once you want to use your warehouse to putting your material or getting out your material, so in that cases it is being integrated with such other functional model. What is the difference between goods receipt and invoice receipt? GR और IR का difference क्या है? What is GR? GR means goods received. Confirmation that material are received. GR means it confirmation that the materials are received. IR means confirmation vendor informations are received. Both are needed to complete the three-way match. See, GR means material received, IR means invoice received. So your GR and your IR should be matched to each other. What are the tables commonly used in SAP MM? This is very important. Those who are working or those who wants to work in SAP MM functional module. कौन सा टेबल इन्वॉल्वमेंट होता है और किस किस पर्पस के लिए होता है. So these are the list of tables and they are used for the following purposes. Like EKPO is mainly used for the PO item, and EKKO also used for the PO header. So PO header used the table of EKKO, and PO item is used the table of EKPO. EBAN, this table is used for purchase requisition. MARA is used for general material data. This is very important table. All the material information are being stored to the MARA table. MKPF, document header of material. MACG, material document segment. MACG, material document segment. सो ये जो सब टेबल है, ये टेबल किस किस काम के लिए यूज होता है, दैट इज ऑल्सो मेंशन बिसाइड. नेक्स्ट, व्हाट आर द सम की चेंजेस इन SAP MM ऑन HANA इन 2025. HANA 2025 में जो MM का क्या क्या चेंजेस आया है. नंबर 1, सिंप्लीफाइड डेटा मॉडल. जो एसीडो का टेबल है, एसीडो का टेबल्स इज रिलेटेड विद द फाइनेंस. तो एसीडो का टेबल में मटेरियल जो मॉडल है वो सिंप्लीफाइड डेटा मटेरियल मॉडल. MRP लाइव, फ्यूरी एप्स फॉर परचेसिंग. फ्यूरी एप्स आर अवेलेबल फॉर परचेसिंग और फॉर योर SAP MM. MRP लाइव हुआ है. MRP लाइव इज ऑल्सो अवेलेबल इन SAP S4 HANA. MRP means material requirement planning. Business partner approach is replacing the vendor master. Previously it was vendor master in ECC, but in SAP S4 HANA it is business partner, that is called in short BP. T code is also BP. Material ledger is now mandatory. Central procurement in S4 HANA cloud. Central procurement in S4 HANA cloud. So these are the some changes in SAP MM 2025. How is the artificial intelligence AI enhancing the SAP MM module in 2025? Now any discussion without AI is incomplete. सब चीज़ में अभी ऐसे AI को इन्वॉल्व हो रहा है, AI का बेनिफिट ले रहा है. तो विदाउट AI कोई भी डिस्कशन अभी आज का डेट पे कंप्लीट नहीं है. तो SAP MM में AI का क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं. इन 2025 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is significantly enhancing SAP MM by enabling predictive procurement, automated invoice processing,
and smart inventory optimization. So these are the very valid points to involve our artificial intelligence in SAP MM, SAP Material Management Functional Module. Now AI is evolving rapidly to any of the SAP module. It could be the functional module, it could be the technical module. But in here about the SAP MM, how AI tools contribute the lots of things to the SAP MM module to automate, to predictive, to the smart inventory optimization. AI tools integrated into SAP S4 HANA and SAP Business Technology Platform, which is called BTP, allow companies to predict material demand using historical and external data, recommend preferred supplier based on past information and pricing, use intelligent chatbot like SAP Joule to automate pre-creation and approval, detect anomalies in pricing, vendor behavior, and delivery timelines using machine learning, optimize stock level and prevent overstock or stock out through AI based forecasting. These capabilities lead to reduce procurement cost, faster decision making, and more agile supply chain. So these are the basic points on the SAP MM to be benefited after getting the AI automations. So if you use the AI in your SAP, or if you use the SAP cloud where all the SAP features including Joules are available, to reduce your procurement cost, faster decision making, and more agile supply chain in your SAP MM module. So ये जो 20 क्वेश्चन आंसर है, 20 क्वेश्चन आंसर I have described, I think it would be benefited to you, or it will be helpful to make yourself ready and understand what kind of trends are there to face in your interview. So please be prepared all the question answer I have described elaborately, so that if you get the relevant question, that also you can able to answer. So thank you all of you. So have a good day.